गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वायलेंस इन हैती। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएनएससी जो है उन्होंने एक इंटरनेशनल इंटरवेंशन अप्रूव कर दी है, जो कि एक फॉरेन सिक्योरिटी मिशन होगा जिसको केन्या लीड करेगा। और इससे सिक्योरिटी जो है वो हैती में रिस्टोर की जाएगी। तो हैती है कहाँ पर, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो आइलैंड ऑफ हिस्पैनियोलिया, मतलब आपके क्यूबा और प्यूर्टो रिको के बीच में जो है ये आपका हैती पड़ता है। और ये अटलांटिक ओशन के नदर्न शोर्स में लोकेटेड है। कैरिबियन सी इसके वेस्ट और साउथ में लोकेटेड है। अब हैती में क्या हो रहा है कि पिछले एक साल से आर्म्ड ग्रुप्स ने लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री को कंट्रोल किया हुआ है, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट 3,000 लोग क्या जो है वो मर चुके हैं। सेक्सुअल वायलेंस और क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इस कंट्री में लगभग हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत है। तो हुआ क्या कि हैतियन प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इंटरनेशनल सपोर्ट मांगा अक्टूबर 2022 में, जब वहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ गैंग्स ने कंट्री के मेन फ्यूल पोर्ट को जो है वो कब्ज़ा कर लिया था। तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर जो है उनके फ्यूल सब्सिडीज़ को कट करने के डिसीजन के ऊपर। वहाँ पर इस मैटर को और वर्स बनाने के लिए बॉटल्ड वाटर की भी जो है वो शॉर्टेज हो गई, जबकि वहाँ पर कॉलरा फैला हुआ था। तो हेतियन लीडर्स जो हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से हेल्प मांग रहे थे। तो एक स्पेशलाइज्ड आर्म्ड फोर्स जो है वो मांग रहे थे कि वो गैंग्स और स्पॉन्सर्स को जो है वो काउंटर करने के लिए दी जाए। तो ऑफ कोर्स यूएन पीस कीपिंग मिशन जो हैती में है वो 2017 में ख़त्म हो चुका है, जो कि एक मल्टीनेशनल सिक्योरिटी मिशन था। अब जो है केन्या ने वॉलंटियर किया कि वो जो है जाना चाहते हैं वहाँ पर, और यूएनएससी के जो है फ्लैग के अंडर जो है यूनाइटेड नेशंस के अंडर वहाँ पर वो सिक्योरिटी को रिस्टोर करेंगे। तो ऑपरेशनल सपोर्ट दिया जाएगा इस मिशन द्वारा हैतियन नेशनल पुलिस को। कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी ताकि वो गैंग्स को काउंटर कर सकें, सिक्योरिटी सिचुएशन कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। कंट्री के जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सिक्योर कर सकें। हैतियन पुलिस के साथ जो है ये अथॉरिटीज़ कोऑर्डिनेट भी करेंगी। और यूएस खुद तो नहीं ऑफ कोर्स अपने ट्रूप्स भेज रहा है, लेकिन $100 मिलियन की असिस्टेंस और लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया जा रहा है। अब क्यों हुआ ये, हैती का जो है पास्ट जो है फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन से ट्रबल्ड रहा है, इसलिए वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो मल्टीनेशनल सिक्योरिटी मिशन को जो है वो पसंद नहीं करती है। तो ऑफ कोर्स हेतियंस जो है वो स्केप्टिकल रहते हैं फॉरेन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, बट इसीलिए जो है ये एक साल तक का टाइम लग गया यूएनएससी को वहाँ पर इंटरवेन करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिनाई पेनिनसुला। ये टॉपिक आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ एड सेवरल कंट्रीज से जो है वो इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला में वेट कर रही है, ताकि वो गाज़ा में जो है वो डिलीवर की जा सके। तो सिनाई पेनिनसुला एक ट्रायंगल शेप पेनिनसुला है, नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट में पड़ता है। ये एक तरह से लैंड ब्रिज है जो कि एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करता है। ये सोवरेन टेरिटरी है इजिप्ट की, और इसकी बाउंड्रीज जो हैं वो नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है, ईस्ट में इसराइल और गाज़ा स्ट्रिप है, वेस्ट में इसके सुएज़ कनाल है, साउथ वेस्ट में गल्फ ऑफ सुएज़ है, इमीडिएट साउथ में रेड सी है, गल्फ ऑफ अकाबा इसके बॉर्डर में पड़ता है साउथ ईस्ट में। मैरीटाइम बॉर्डर जो है इजिप्ट का वो जो सिनाई का है वो जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के साथ भी शेयर होता है। अब लेट 19 सेंचुरी में इजिप्ट के पास ही होता था ये सिनाई पेनिनसुला, लेकिन बाद में ये ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन गया। ब्रिटिश रूल यहाँ पर 1922 तक रहा, जब इजिप्ट को इंडिपेंडेंस मिल गई। लेकिन 6 डे वॉर 1967 में इसराइल ने इसको कैप्चर कर लिया था सिनाई पेनिनसुला को, जिसको वापस इजिप्ट को दिया गया 1982 में, जब पीस ट्रीटी साइन हुई इसराइल और इजिप्ट के बीच में। अब ये जो एरिया है, बहुत से माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज, कोस्टल रीजन है यहाँ पर। ये लेकिन स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब सिर्फ 6 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं, मोस्टली अरब, इजिप्शियंस और बेदोइंस। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हेल स्टॉर्म। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक इंटेंस हेल स्टॉर्म जो है वो उसने मैसिव डैमेज किया है क्रॉप्स और फ्रूट्स को साउथ कश्मीर के कुलगाम और शोपियान डिस्ट्रिक्ट्स में। हेल एक तरह से सॉलिड रेन होती है जो कि लम्प्स ऑफ आइस की बनी होती है। स्टॉर्म्स जो कि हेल प्रोड्यूस करते हैं उनको हम हेल स्टॉर्म्स कहते हैं। जनरली ये 15 मिनट से ज़्यादा लास्ट नहीं करती, और ये इंजरी टू पीपल और ये डैमेज टू बिल्डिंग, व्हीकल्स एंड क्रॉप कर सकती है। मिड लैटिट्यूड्स में बहुत कॉमन है ये। जनरली ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में डेवलप होती है, जो कि मशरूम शेप्ड क्लाउड्स होते हैं, जो कि जिनकी हाइट लगभग 65,000 फीट से भी ज़्यादा हो सकती है। स्ट्रॉन्ग करंट्स ऑफ एयर जब ये बढ़ते रहते हैं ऊपर हाइट में, तो ये जो है हाई कंसनट्रेशन ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं आइस में या आइस ड्रॉपलेट्स में।
और ये जितना ऊपर उठते जाते हैं सुपर कूल्ड पार्टिकल्स ये आइस में कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे ये हेल एम्ब्रियो साइज़ में बड़ा होता है, साइज़ आइस का साइज़ बड़ा होता रहता है, तो ग्रेविटी अपना काम करती है और ये बारिश के साथ नीचे गिरते हैं। तो जो लार्ज हेल स्टोन्स होते हैं ये इनकी तो क्लियर और ओपेक आइस होती है और इरेगुलर रेट्स ऑफ इनका फ्रीजिंग होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जादेरी नामाकट्टी। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली जादेरी नामाकट्टी को जीआई टैग दिया गया है, जीआई इंडिकेशंस जीआई रजिस्ट्री द्वारा चेन्नई में। तो ये जादेरी नामाकट्टी है क्या? क्ले स्टिक्स हैं जो कि वाइट कलर में होती हैं। तिरुवन्नमलाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में ये जादेरी विलेज पड़ता है। नामाकाटी जो है एक रिच डिपॉजिट ऑफ हाइड्रस सिलिकेट मिनरल्स से बनाया जाता है और ये फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले हैं बेसिकली। इसको फोर हेड्स बनाने में आइडल्स, मैन, टेम्पल एलिफेंट्स और इवन चाइल्ड बर्थ की वजह से जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उसको ट्रीट करने में भी यूज़ किया जाता है इस क्ले को। जोग्राफिकल इंडिकेशन आपको पता ही है, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन हो और ये वो क्वालिटीज़ पोजेस करता हो या रेपुटेशन हो उसकी उस ओरिजिन की वजह से, तो उसको ये जीआई टैग मिलता है और ये जीआई टैग 10 साल के लिए वैलिड होता है, जिसको रिन्यू भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फास्ट रेडियो बर्स्ट। तो एक रीसेंट स्टडी हुई है एस्ट्रोनॉमर्स की यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो द्वारा। तो उसमें कहा गया है कि स्टार क्विक जो है वो फास्ट रेडियो बर्स्ट जो है वो की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, तो फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या होते हैं? ये ब्राइट ब्रीफ बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये फार अवे गैलेक्सीज से आते हैं और ये इतनी एनर्जी लाते हैं 1 मिली सेकेंड के अंदर जितनी सन कई हफ्तों में निकालता है। ठीक है, और ये जनरली कहा जाता है कि एफआरबीज न्यूट्रॉन स्टार्स द्वारा एमिट किए जाते हैं। मैग्नेटार्स या फिर न्यूट्रॉन स्टार्स जो हैं वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के होते हैं और जनरली वही जो है ये एमिट करते हैं एफआरबीज को। रिसेंट स्टडीज़ में ये देखा गया है कि सिमिलैरिटीज़ हैं रिपीटेड एफआरबीज में और अर्थक्वेक्स या फिर सोलर फ्लेयर्स में। तो अब ये देखा गया है कि सोलर फ्लेयर्स और एफआरबीज में डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस हमें दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सी सिमिलैरिटीज़ ज़रूर हैं एफआरबीज और हमारे अर्थक्वेक्स के बीच में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जेरिको मिसाइल सिस्टम। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक इजरायली लेजिस्लेटर है, उन्होंने रिसेंटली न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने की बात की थी हमास में और पैलेस्टीन के अगेंस्ट। तो एक्चुअली ये न्यूक्लियर वेपन का टॉपिक वेस्ट एशिया में दोबारा से इसलिए न्यूज़ में आ गया है। तो जेरिको मिसाइल सिस्टम कहाँ से न्यूज़ में आया ये भी देख लेते हैं। तो जेरिको जो है इसराइल का ओरिजिनल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है जो कि 1960s में इनिशिएट किया गया था, जिसका नाम वेस्ट बैंक की सिटी जेरिको के नाम पर पड़ा है। तो ये प्रोग्राम इनिशियली फ्रेंच के साथ कोलैबोरेट करके इसराइल बना रहा था, लेकिन फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट ने इससे विड्रॉ कर लिया और इसराइल ने लेकिन अपनी जो है डेवलपमेंट कंटिन्यू रखी। जेरिको 1 एक जो है प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में जो जेरिको 1 था वो 6.5 टन का जो है वो वेट का जो है मिसाइल था, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर्स थी। 1000 किलोमीटर्स पेलोड जो है ये 1000 किलोग्राम्स पेलोड लेके जा सकता था। जेरिको 2 1980s में बनाया गया, इसकी रेंज लगभग 1500 से 3500 किलोमीटर थी। जो जेरिको 3 है इसको फर्स्ट 2008 में टेस्ट किया गया और 2011 में सर्विस में डाला गया। ये फर्स्ट इजरायली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अब इसकी रेंज अगर हम देखें तो ये 4800 किलोमीटर से लेकर 6500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और ये इनर्शियल गाइडेंस को यूज़ करता है, रडार गाइडेड वॉरहेड को, और ये 750 kg न्यूक्लियर वॉरहेड द्वारा इसको इक्विप किया जा सकता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is violence in Haiti. This topic is important for your international relations. So UNSC has recently approved international intervention in the form of foreign security mission, which would be led by Kenya, so as to restore security and control spiraling violence in Haiti. So UNSC has voted to adopt the resolution in this regard. So where is Haiti? Haiti occupies the western 1/3 of the island of Hispaniola, which is situated between Cuba and Puerto Rico, and it shares border with the Dominican Republic. Okay, so Atlantic Ocean borders Haiti's northern shores, and the Caribbean Sea is to the west and south of it. So Haiti has experienced a surge in violence over the past 1 year as armed groups have taken control of large parts of the country, and it has resulted in widespread killings of nearly
2,800 people. So the human rights group have also reported a rise in sexual violence and crimes against women. As per the estimates, almost half of the population is in need of humanitarian assistance. So Haitian Prime Minister Ariel Henry had first sought international support to assist the national police in October 2022. This happened after the country plunged into a crisis when a group of gangs called G9 and Family, they seized control of Haiti's main fuel port, Verriex, in the capital, and they were protesting against the prime minister's decision to cut fuel subsidies. So to make matters worse, there was also a shortage of bottled water in the backdrop of a new outbreak of cholera. And as the crisis deepened, Haitian leaders turned to international community for help, and they sought a specialized armed force to counter gangs and their sponsors. So, what would be the mission? So, unlike the UN peacekeeping mission that ended in 2017 in Haiti, this multinational security mission has been approved by UNSC, and it will not be operated by the United Nations. Kenya has volunteered to lead this force, and other countries like the Bahamas, Jamaica, Antigua and Barbuda, they have also offered some sort of support. So this force will provide operational support to the Haitian National Police, and it would include capacity building of the police to counter gangs, improve security conditions in the country, and secure ports, airports, and critical intersections. The forces will also have the authority to make arrests in coordination with Haitian police, and this would create favorable conditions in the country to pave the way for elections also, which have not taken place since 2016. US is not pledging direct troop support, but it will support logistically in the form of intelligence, communication, airlift operations, and medical aid. And it has also pledged $100 million for as support. So, what has led to this delay in intervention? Actually, the people of Haiti, they are troubled with foreign military interventions. This is the primary reason for the delay in this deployment of multinational security mission. The people of Haiti are skeptical about the intervention of any foreign armed force. So the next topic is Sinai Peninsula. This topic is important for your international relations. So hundreds of tons of aid from several countries have been waiting in Egypt's Sinai Peninsula for days, pending a deal for its safe delivery to Gaza. So Sinai Peninsula is a triangle-shaped peninsula which is located in northeastern Egypt, and it serves as a land bridge connecting Asia and Africa. It's the sovereign territory of Egypt, and it is bordered to the north by Mediterranean Sea, and to the east by Israel and the Gaza Strip, to the west by Suez Canal, and to the southwest by Gulf of Suez, and to the immediate south by the Red Sea. The Gulf of Aqaba borders the Sinai in the southeast, and Egypt also shares maritime borders in the Sinai with Jordan and Saudi Arabia. In late 19 Before late 19th century, Sinai was part of Egypt, but after this period, Sinai Peninsula became part of the British Empire. So British rule in Egypt lasted until 1922, when Egypt was granted independence. So this peninsula was occupied by Israeli forces during the Six-Day War of June 1967. It was later returned to Egypt in 1982 under the terms of the peace treaty. So this region has diverse landscape, including mountain ranges, deserts, plateaus, and coastal regions. But it is sparsely populated. About 600,000 people live in this region, and it is mostly inhabited by Arab Egyptians and Bedouins. So the next topic is hailstorm. This topic is important for your environment section. So an intense hailstorm has caused massive damage to the crops and fruits in the South Kashmir's Kulgam and Shopian districts. So hail is a type of solid rain which is made up of balls or lumps of ice, and the storms which produce this hail and which reaches the ground, it is called the hailstorms. So they typically last for not more than 15 minutes, but it can cause injuries to people and damage to buildings, vehicles, and crops. It is very common in mid latitudes. So how it occurs? So highly developed cumulonimbus clouds need to be present. They are the mushroom-shaped clouds which are seen during thunderstorms, and they can reach about 65,000 feet of height. There must be strong currents of air ascending through these clouds. These clouds need to contain high concentrations of supercooled liquid water also. So how are these hails formed? So they begin as a water droplet, and it is swept by an updraft inside of a thundercloud. Other supercooled water droplets, which are also present
inside the air adhere to this water droplet surface. They form basically the layers of ice around it. When this hail embryo starts growing larger, it reaches a size, and when it cannot escape the force of gravity, it starts beginning to fall down. And these larger hailstones, they are also characterized by clear and opaque ice caused by irregular rates of freezing. So the next topic is Jaderi Namakatti. This topic is important for your economy section. So recently, Jaderi Namakatti has been given the GI tag by Geographical Indications Registry in Chennai. So these are clay sticks which are white in color, and Jaderi is a small village in Tiruvannamalai district of Tamil Nadu. So Namakatti is made up of rich deposit of hydrous silicate minerals, which form fine grained particles of clay. So this clay is used to adorn the foreheads of idols, men, and temple elephants, and it has also been used traditionally to treat stretch marks which are caused by childbirth. So we all know that geographical indication is a sign which is used on products which have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation which due to that origin. Okay, so this GI tag is valid for 10 years, which can be renewed, and this GI tag is generally used for agricultural products, foodstuffs, wine and spirit drinks, handicrafts, and industrial products. So the next topic is fast radio bursts. This topic is important for your science and tech section. So according to a recent study by astronomers from the University of Tokyo, starquake have become are a source of rather the fast radio bursts. So what are these fast radio bursts? So a fast radio burst is a bright and brief burst of electromagnetic radiation, which usually lasts for a very short period of time, sometimes even milliseconds. They reach Earth from faraway galaxies, and they emit as much energy in a millisecond as the sun does over several weeks. So the current prevailing theory is that at least some of the FRBs are emitted by neutron stars, which are also called the magnetars, and they have extremely strong magnetic fields, which makes it possible to emit FRBs by them. Okay, so previous studies have noted broad similarities between energy distribution of repeated FRBs and that of earthquakes and solar flares, but new research by University of Tokyo has found that there are distinct differences between FRBs and solar flares, but there are notable similarities also between the FRBs and earthquakes. So the next topic is Jericho missile system. This topic is important for your security section. So an Israeli legislator had recently called for the use of a doomsday weapon, which is also called the nuclear weapon, against Hamas. And this has put spotlight on the nuclear weapons in West Asia, particularly the Jericho missile system of Israel. So it is the Israel's original ballistic missile program, which was initiated in 1960s after the name of Jericho, which is a biblical city located on the West Bank. And this program was initially a collaboration between the French company Dassault and Israel, but France withdrew from it in 1969, but Israel continued the development of it. So first was the Jericho one, which had a weight of 6.5 tons. It had a range of 500 kilometers, and it could carry a 1,000 kilometer payload. It was retired in 1990s. Then came the Jericho 2, which was developed in late 1980s. It had a range between 1,500 to 3,500 kilometers. But the latest one, which is currently in force, is the Jericho 3, which is Israel's intercontinental ballistic missile. It was first tested in 2008 and it entered into service in 2011. It has a range of 4,800 to 6,500 kilometers, and it uses inertial guidance with a radar guided warhead, and it is equipped with 750 kg nuclear warhead. It has an estimated launch weight of 29,000 kilograms, and it can have a payload of 1,000 to 1,300 kgs. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.